with our Eid makeup series, and this is our look number 1, and we will be creating so many more, so stay tuned for them. And before starting the video, please subscribe to our channel and hit the bell icon to be the first one to watch our video. To start off, I am filling in my brows और उसके बाद मैंने स्टिक बेस से उनको कार्व आउट किया। वही बेस मैंने अपनी लिड को प्राइम करने के लिए यूज़ किया है। फिर मैंने एक एंगल ब्रश पे ये ब्लू शेड लेके अपनी क्रीज के अंदर प्लेस किया है। आहिस्ता आहिस्ता हम ग्रेजुअली इसको बिल्डअप करेंगे इस तरह से इंटेंस हो जाए। उसके बाद मैंने एक ब्लैक शेड लिया और उस ब्लैक शेड को मैं अपनी क्रीज की फोल्ड में प्लेस करूँगी ताकि ब्लू कलर जो थोड़ा और इंटेंस हो जाए। उसके बाद मैंने ब्लू और ब्लैक शेड दोनों को मिक्स करके अपनी क्रीज को ब्लेंड आउट किया है। That it looks like this. Then I'm taking this shade and blending out my crease with it. We have to blend very well ताकि कोई भी harsh lines ना नज़र आए हमें। जब अच्छे से blend हो जाएगा तो फिर मैं सेम blue shade सेम ब्रश की मदद से जो है दोबारा से अपनी क्रीज में प्लेस करूँगी। फिर ब्लेंड करने से थोड़ा blue shade light हो गया था। उसके बाद I'm going in again with a blending brush to blend out everything. उसके बाद मैंने अपनी कंसीलर से जो है अपनी क्रीज को कट कर रही हूँ। After cutting my crease, I'm generously placing this gold shimmery shade all over my lid. After that, with the same blue shade, मैं अपनी क्रीज को थोड़ा सा sharp कर रही हूँ। Then I'm just placing the same blue shade in my outer corner. Afterward, using the same blending brush, I will blend it out as well. उसके बाद मैं क्लैश कलर से अपनी लैशेस को कर्ल करूँगी, मस्कारा लगाऊँगी और फिर फॉल्स लैशेस अप्लाई करूँगी। लैशेस लगाने के बाद I am priming my face. I am applying some concealer under my eyes, on bridge of the nose, forehead, cupid's bow and chin. उसके बाद उसको अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे। After concealer, I am applying some foundation and then blending it out as well. उसके बाद हम कॉम्पैक्ट पाउडर से अपने फेस को अच्छी तरह सेट कर लेंगे। Then by using a bronzer, I am contouring my face. Contouring, I am applying some blush on the apples of my cheek and tip of the nose. After that, I am highlighting the highest point of my cheekbone, bridge of the nose, forehead, cupid's bow and chin. उसके बाद मैं एक मरून लिप पेंसिल से अपने लिप्स को लाइन करूँगी। Lastly, I am applying liquid lipstick all over my lips and then I am done. So this is the end of the video. I hope that you guys liked it. If you did, please give it a thumbs up.